In this lesson, we will learn conjugation of verb karna. Karna means to do. We will learn conjugations of verb karna. Karna means to do. So, first we will learn the composition of words used in this lesson. How the words are composed. First word is मैं. मैं. This is मैं. This is printed form and this is written form, handwritten form. मैं. मैं contains three words, three letters. Mim, ye and noon gunna. Mim zabar ma, badi ye and noon gunna. मैं. When these letters are combined, they take the shape of this. This is mim, this is ye, and this is noon gunna. मैं. 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 Another word is तुम. तुम. तुम is composed of two letters, te pesh tu and mim तुम. 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 Next word is आप. Alif mad a and pe आप. Then हम. He zabar ha and mim हम. Then वो. वाव है वो. वाव है is वो. कर. कफ जबर का and रे कर. कफ जबर का and रे कर. कर. रहा. रे जबर रा. हे अलिफ हा. रहा. हूँ. हे वाव with उल्टा पेश and नोन गुन्ना. हूँ. हूँ. रहे. रे जबर रा. हे जेर ही and बड़ी ये. रहे. रहे. हो. हे वाव. हो. हे वाव is हो. हैं. हे जबर ह बड़ी ए एंड नोन गुन्ना. हैं. हैं. काम. काफ अलिफ का एंड मीम काम. क्या. काफ ये अलिफ क्या. 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 हाँ. हे अलिफ नून गुन्ना. हाँ. हाँ. नहीं. नुज़बरना है छोटी ये एंड नून गुन्ना. नहीं. नहीं. करना. काफ रे काफ जबर रे कर नून अलिफ ना. करना. 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 करना is a verb and we will learn conjugation of this verb करना. All the Urdu verbs end in na. करना, आना, जाना, खाना, पीना. All the Urdu verbs end in na. Na. And if we remove na from this verb, for example, we remove na from karna, so we get the root kar. Kar. Karna, we removed na
and we get the root kar. Kar. And today we are going to conjugate this verb in present indefinite form. वो कर रहा है, वो कर रहा है. We know that kar is root from the verb karna, and वो means he or she. वो means he or she, and we add raha hai in the root kar, and it is kar raha. Kar raha is used with wo, and wo kar raha hai. Wo kar raha hai means he is doing. Wo kar raha hai, he is doing. And वो कर रही है. We have a single word for he and she, and it is wo. But the gender is indicated by conjugation of the verb. Look here. In case of he, we used कर रहा है, and in case of she, we use कर रही है. कर रहा है, वो कर रहा है, he is doing. वो कर रही है, she is doing. वो कर रहा है, वो कर रही है. कर रहा is used with वो in the sense of he, and in the sense of she we used कर रही. वो कर रही है. So वो कर रहा है, he is doing. वो कर रही है, she is doing. And now मैं कर रहा हूं. मैं कर रहा हूं. मैं means I, and kar is same, and we used raha hoon for मैं. मैं कर रहा हूं. मैं कर रहा हूं means I am doing. But मैं कर रहा हूं we used in masculine sense. Here मैं is used for masculine. So मैं कर रहा हूं it means I am doing. A man is speak. When a man will speak, he will say मैं कर रहा हूं. If a lady will speak, she will say मैं कर रही हूं. मैं कर रही हूं. So Urdu verbs also conjugation of Urdu verbs also tell us about gender of the speaker. So मैं कर रही हूं means I am doing, and मैं कर रहा हूं means I am doing. Both means I am doing. But मैं कर रहा हूं is masculine, and मैं कर रही हूं is feminine. मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं. Similarly, तुम कर रहे हो. तुम कर रहे हो. तुम means you. तुम कर रहे हो. So it speaks that it means that speaker is a male. तुम कर रहे हो. And when the speaker is female, she will say तुम कर रही हो. You are doing. For you, we have the same word तुम. तुम कर रहे हो and तुम कर रही हो. तुम कर रही हो means some lady is speaking. तुम कर रही हो. Or we are telling about a lady. We are talking to a lady. तुम कर रही हो.
When a lady will talk to a man, she will say तुम कर रहे हो, you are doing. तुम कर रहे हो is masculine, तुम कर रहे हो, and तुम कर रही हो, you are doing. It means we are talking to a lady. तुम कर रही हो. आप कर रहे हैं. आप कर रहे हैं, you are doing. I have already told you that we have two words, rather three words for you. तुम, तू, तुम and आप. तू is very informal. We use this word with our younger ones or among our friends or whom we are very close. Then we use tu. And tum is a little is also informal, but less informal than tu. And aap is very formal, and we generally use aap with strangers or with our elders to show respect. Aap. So aap is very formal, and take an example from French. We have two words, tu and vous. Tu. Tu is tum, we can say tu is tum, and vous is aap. Vous is aap. So in the same sense, aap kar rahe hain, you are doing. Aap kar rahe hain. We speak, if we are speaking to a man, then we say aap kar rahe hain. And if we are speaking to a lady, then we will say aap kar rahi hain, you are doing. Aap kar rahi hain, you are doing. हम कर रहे हैं, we are doing. हम कर रहे हैं, we are doing. When हम is हम कर रहे हैं, here हम is masculine. हम कर रहे हैं, we are doing. And we also use in feminine, हम कर रहे हैं. हम is same for हम कर रहे हैं is same for masculine and feminine. Men will say हम कर रहे हैं, ladies will also say हम कर रहे हैं, we are doing. वो कर रहा है, he is doing. वो कर रहा है, he is doing. वो कर रही है, she is doing. वो कर रहे हैं, they are doing. Now here we have used wo in plural form. So how do we know that here it is used in plural form? Because we can learn this from the conjugation of the verb. So here we are using in the sense of they. Therefore we have used kar rahe hain. In the sense of he, वो कर रहा है, and in the case of she, वो कर रही है. In the case of they, masculine, we use वो कर रहे हैं, they are doing. Means when we are talking of men, we will say वो कर रहे हैं, they are doing. And if we are talking about ladies, then we will say वो कर रही हैं. वो कर रही हैं, they are doing. वो कर रही हैं, वो कर रही हैं, कर रही हैं. They are doing. It means we are talking about ladies. वो कर रही हैं. So काम means work. काम means work. काम करना means to work. काम करना means to work. काम करना to work. मैं काम कर रहा हूँ. मैं काम कर रहा हूँ. I am working.
मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग। तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग। क्या, क्या मीन्स वॉट, क्या मीन्स वॉट। In Urdu, in interrogative sentences, we use question words. In English, we also use question words, but sometimes question words are not used, especially in those sentences where we use where we put verb at the beginning of the sentence to make it an interrogative. Even in such sentences, we use a question word in Urdu. Let's see how we do this. आप कर रहे हैं, you are doing. आप कर रहे हैं, you are doing. आप क्या कर रहे हैं, what are you doing. Here, क्या means what. आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, you are doing. आप क्या कर रहे हैं, what are you doing. क्या आप कर रहे हैं, are you doing. Are you doing. Here in English we have put the verb at the beginning of the sentence, are you doing. But in this sentence we have also used a question word, kya. So in such cases where verb is put at the beginning of the word in English, where verb is put at the beginning of a sentence in English, we use word kya. So are you doing, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, are you doing, क्या आप कर रहे हैं. क्या आप कर रहे हैं, आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग. क्या आप कर रहे हैं, आर यू डूइंग. क्या आप कर रहे हैं, आर यू डूइंग.